Hello and welcome to Kashmir Now. I'm your host Shivangi Mishra. Let's take a look at what made news this week. POK faces severe load shedding. Stooge administrations take no cognizance. A POK activist claims residents of POK and Gilgit-Baltistan demand freedom from illegal Pakistani administration. New school building in Borders district of Rajouri brings cheers to the students. Indian Army in collaboration with NGOs organized camps to support specially abled in Ganderbal district. And in our special section of Incredible India, we take you to visit Ujjain, where Tourism Department organized a unique skydiving festival to promote religious tourism in the state of Madhya Pradesh. Severe load shedding and inflated electricity bills have perturbed residents of POK. The affected sections of society are annoyed with the administration. Despite producing massive amount of electricity through several hydroelectric plants established in the region, POK receives not even 400 megawatts of electricity to meet its power requirements. Along with load shedding, residents of the illegally occupied territory are facing multi-pronged problems in POK. We have a report. The issue of severe load shedding and inflated power bills has been affecting all sections of society in Pakistan-occupied Kashmir. People are irked as they are forced to pay high prices for merely hours' worth of electricity. They say it is unfair that even after generating thousands of megawatts of electricity through hydropower projects in the region, they are made to suffer. लोड शेडिंग हो रही है। ये एक जो बरकियात है या वापटा है, ये एक कारोबारी इदारा है, ये आपसे पैसे लेता है। और फिर इसमें एक और चीज़ जो मैं जिसके ऊपर मेरा हमेशा से एतराज़ रहा है, 2015 में आपको याद होगा कि मैंने दिन रात धरना दिया और मुझे अल्लाह ने नई ज़िंदगी दी। खौफनाक किस्म का एहतजाज था हमारा, और अभी तक ये चीज़ें जो है वो हल तलब हैं और एड्रेस तलब हैं, और बार बार जो है लोग इस इश्यूज़ के लिए अपने घरों से बाहर निकलते हैं, एहतजाज करते हैं, तो इसे प्रॉपर एड्रेस करना चाहिए। There have been several protests in recent months, but authorities have kept on neglecting these issues. Locals believe they are being forced to bear the brunt of Pakistan's failed economic policies, and there is no relief in sight in near future. हम यहाँ एक एहसास खित्ते में रह रहे हैं। कश्मीर के लोग जो है एहसास हैं। इन लोगों के पास जो है कोई फैक्ट्रियाँ नहीं हैं, कोई रोजी रोटी का मासवाए कारोबार छोटे मोटे करने के कोई और ऑप्शन और जरिया नहीं है, या फिर सरकारी मुलाजमतें हैं। There are multi-pronged issues affecting the people of Pakistan-occupied Kashmir. The region is suffering high inflation, spike in food prices, and other essentials required to run their livelihood. In these challenging times for POK, the administration, rather than providing some relief to the residents, is continuously increasing taxes on electricity and finding new ways to persecute locals. A POK activist, Amjad Ayub Mirza, has raised concerns over the plight of people in Pakistan-occupied Kashmir and Gilgit-Baltistan. The prevailing economic hardships and issues like poverty, inflation, high electricity bills have broken the backs of residents. The overwhelming persecution by the Pakistani administration for more than 7 decades has disgruntled the locals. The activist claims the residents want freedom from the Pakistan's illegal administrations in POK and Gilgit-Baltistan. We have a report. A prominent activist from POK, Amjad Ayub Mirza, has claimed that the people in Pakistan-occupied Kashmir
are fed up with Islamabad's illegal occupation and they want freedom after 7 decades of persecution. The activists vehemently blamed Pakistan for plundering the natural resources in the illegally occupied POK and Gilgit-Baltistan. पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के अवाम ये सवाल करते हैं पूरी दुनिया से कि 76 ईयर्स से हमारे हुकूक पर, हमारे ज़मीनी और पानी के जो रिसोर्सेज हैं, वसाइल हैं, उन पर जो डाका डाला जा रहा है, दिन दिहाड़े डाका डाला जा रहा है, तो हम कौन सी अदालत में या कौन से थाने में जाके रिपोर्ट लिख रहे हैं? The activists revealed that the residents of POK and Gilgit-Baltistan have resolved to lead protests against Pakistan. The campaign for merger in India is getting momentum across the two illegally occupied territories. The activist and his followers seem to be in no mood to hold any kind of relations with Pakistan. हम भारत में शामिल होने की अपनी कैंपेन को पीओजेके में, गिलगित बल्तिस्तान में और डायस्पोरा में जारी रखेंगे। ये फैसला किया गया है और ये मशावरत के साथ वोटिंग के ज़रिए इस लाएअमल को एक दफ़ा फिर एंडोर्स किया गया है कि हम भारतीय शहरी हैं और किसी भी कीमत पर हम पाकिस्तान के साथ किसी किस्म की कोई सौदेबाजी या किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात जो है वो करने के लिए तैयार नहीं हैं। The activist has also given a call for Resistance Day against Pakistan to be held on March 5th across the two illegally occupied regions. Over the last many months, POK and Gilgit-Baltistan have witnessed continuous protests against cuts in wheat subsidies and high electricity bills. The locals accuse Islamabad of exploiting their natural resources and leaving them deprived of even the basic essential services. Moving on. Bringing joy and comfort to the students of Government Higher Secondary School at Dehri Ralyot in the border district of Rajouri, the government has established a new academic building. The school now has state-of-the-art labs and smart classes to enhance the learning opportunities for the students. In border area and a hilly terrain, the construction of school building was certainly a challenge, but also an enduring gift to the students. The development of this modern school would encourage the school children to study hard and bring laurels for the country. Take a look. The good education is the bedrock of national growth. With an aim to develop the young minds, the government is endeavoring to provide quality infrastructure and education in every district of the Union Territory of Jammu and Kashmir. In the border district of Rajouri, the administration has established a new school building for the students of Government Higher Secondary School in Dehri Ralyot. The new school building has been equipped with the state-of-the-art science labs and smart classrooms to provide quality education. हमारे लिए क्लासरूम्स बन गई हैं, डेस्क वगैरह आ गए हैं, उसके बाद बहुत सारे और लैब बन गया है, स्मार्ट क्लासेस हैं हमारे लिए। उसके बाद और भी यहाँ पे अभी बिल्डिंग भी कंस्ट्रक्शन के लिए है जिससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। फिर लैब्स हैं, पहले साइंस की लैब्स भी नहीं होती थी और हमारी प्रॉपर क्लासेस होती हैं, साइंस स्ट्रीम की भी, नॉन साइंस स्ट्रीम की भी, आर्ट स्ट्रीम के भी सारे लेक्चरर्स हैं। Under the Samagra Shiksha scheme of the government, information and communication technology labs have also been set up to keep the students up to date with the developments happening all across the globe. A number of residential buildings have also been constructed so that teachers coming from other districts could save travel time and stay available for the students. हमें स्कूल में आए हुए तकरीबन 2 साल हो गए। 2 साल से पहले तो ना यहाँ पे कोई बैठने की जगह होती थी, ना बच्चों की और ना टीचर्स के लिए कोई फैसिलिटीज़ थी। अब तो टीचर्स के लिए
रेजिडेंशियल क्वार्टर भी हैं, जो दूर के टीचर हैं आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट वो यहाँ पे रह सकते हैं। और हमारे लिए भी सर ने चिल्ड्रन पार्क बनाई है, प्रिंसिपल सर ने। The school authorities too are supporting the development drive and working shoulder to shoulder with the government. Apart from regular subjects, vocational training in health and agriculture are also added to the school curriculum. The students can now choose from diverse fields of interest and expand their horizon of knowledge. मुझे स्कूल में तकरीबन तीसरा ईयर है और इस 3 ईयर में मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है। इस स्कूल में हर ईयर कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि पहले नहीं थी। ये कल्चरल एक्टिविटी कॉमन सेंस सर की वजह से हो रही हैं और इसमें काफ़ी स्कूल में इम्प्रूवमेंट हो रही है। इसकी बिल्डिंग में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रही है। ये देख सकते हैं आपकी हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है काम इसका, और ये हमारी अभी कुछ ही अरसा हुआ है हमें ये न्यू बिल्डिंग बनी हुई मिली है और इसमें अच्छे से स्टडी भी कर पाते हैं हम। The construction of the school building in hilly terrains of the border district was certainly a challenge for the administration, but it is also an enduring gift to the students who are now filled with excitement and are ready to bring laurels for the Union Territory and the whole nation. To ensure an all-inclusive growth for the specially abled members of the society in Jammu and Kashmir, the Indian Army, along with many NGOs, organized camps in several villages of Darbar district. The primary focus of the camps was to empower these individuals through skill building and support them in gaining self-reliance. The Army and the NGOs also provided them wheelchairs, tricycles and other tools to enhance their mobility and navigate their path to success. We have a report. The Indian Army, in collaboration with several NGOs, organized camps at different villages in Darbar district to cater specially abled individuals of the Union Territory of Jammu and Kashmir. These specially abled members of the society were provided general medical treatment and assistive devices such as hearing aids, wheelchairs to ensure an all-inclusive growth in the Union Territory. सबसे पहले तो मैं यहाँ के लोगों की तरफ से 34 आसाम राइफल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज यहाँ पे एक मेडिकल कैंप जो ऑर्गेनाइज़ किया। मैं यहाँ के लोगों की तरफ से आपको ये कहना चाहूँगा कि आज इंडियन आर्मी ने 34 आसाम राइफल के कमांडिंग अफसर हुसन जो है सीओ साहब, उन्होंने यहाँ पे जो आज प्रोग्राम किया है वो अपने आप में एक मिसाल है। उन लोगों की आज यहाँ पे मदद हो रही है जो बहरे हैं, गूंगे हैं, चल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, हाथों से काम नहीं कर सकते। उन लोगों के लिए आज का प्रोग्राम जो है इंडियन आर्मी ने यहाँ पे 34 आसाम राइफल ने ऑर्गेनाइज किया है। इसके लिए मैं तहिया दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और उन लोगों की आज मदद हो रही है जिन्हें मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। शायद इनकी आवाज़ कोई नहीं सुनता, इनकी फरियाद कोई नहीं सुनता, लेकिन इंडियन आर्मी 34 आसाम राइफल ने इनकी तरफ ध्यान दिया और गाँव-गाँव में जाके ऐसे लोगों को चुन के यहाँ पे लाया जिन्हें आज यहाँ पे सिलाई मशीन मिल रही है, साइकिल मिल रही है और हेयरिंग मशीन मिल रही है। ये एक बहुत बड़ी बात है। Specially abled individuals from many villages of Darbar district were identified and brought to the camp for their welfare. The camp served as beacon of hope for underprivileged specially abled people of Kangan, a subdivision of Darbar district. The Indian Army not only provided them with assistive healthcare devices but also gave them skill-building tools such as sewing machines and other equipment to make them self-reliant. बहुत सारे फायदे मिल रहे हैं। आज आर्मी वालों ने यहाँ पे एक मेडिकल कैंप लगाया है जिसमें हैंडीक्राफ्ट लोगों को यहाँ पे चीज़ें मिल रही है जैसे कि सिलाई मशीन, एयर मशीन, व्हील चेयर्स, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। मुझे आज सिलाई मशीन मिली ताकि मेरा रोजगार आगे बढ़े। मैं इंडियन आर्मी का शुक्रगुजार हूँ। The specially abled were provided wheelchairs, hearing aids, tricycles, braille material and many other tools to navigate their path to success. The initiative undertaken by the Indian Army and NGOs was well praised across the region.
व्हील चेयर सब इक्विपमेंट्स दस्तियाब कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव आर्मी ने उठाया है, इंडियन आर्मी ने। बहुत ही शुक्रगुजार हूँ मैं इंडियन आर्मी के, उन्होंने इनके लिए ये ऐसे स्टेप उठाए और इनको ये इक्विपमेंट रिक्वायर किए। Indian Army, along with the government, has been organizing many such camps across the Union territory to bring growth and prosperity to every section of the society. The camps for specially abled individuals in Ganderbal have not only empowered this section of the society, but also given them an encouragement and belief that they are no less than anyone. Government of India is taking great strides in developing the Union Territory of Jammu and Kashmir. Be it education, skill development, infrastructural growth, or fulfilling the aspirations of the youth of the region, the government has ensured growth and prosperity. To measure their success on grassroots level and establish personal connect with the people, the government has started public darbars in Srinagar, where residents can directly connect with the higher officials and discuss their grievances and get those resolved. Take a look. Reaching the common residents and resolving the issues at grassroots level has remained a top priority for the government in Jammu and Kashmir. Aligned with the same goal, the administration has started organizing public darbars in Srinagar, where common people from all walks of life can directly communicate with the heads of different departments and express their issues. It is also an opportunity for the government officials to establish personal connect with the residents and measure the success of their policies at ground level. Secretary of School Education, Dr. Piyush Singhala, presided the mega public darbar at Banquet Hall in Srinagar and took stock of the issues and demands of the people. एक ही मकसद है कि जो उनके इश्यूज हैं उनको हल किया जाए और ताकि उनको ऑफिस के चक्कर ना काटने पड़े। बहुत सारी सर्विसेज को भी ऑनलाइन किया गया है इसी के सिलसिले में। आज श्रीनगर में इसी तरीके का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर द्वारा एक बहुत एग्जॉस्टिव मैं कहूँगा कैंप ऑर्गेनाइज करवाया गया, जिसमें सिर्फ श्रीनगर के मेन हार्ट श्रीनगर के इश्यूज नहीं बल्कि जो आसपास वाले हमारे एरियाज़ हैं, जो श्रीनगर में भी कुछ पेरिफेरल एरियाज़ हैं, वहाँ की मेजर डेलीगेशंस आई, लगभग 50 के आसपास डेलीगेशंस थी। उन सब ने अपने मुतालबे रखे और सभी डिपार्टमेंट्स को उसमें नेसेसरी हिदायतें दी गई। The delegations who came from different parts of Srinagar and peripheral areas appreciated the initiative and expressed their desire for more such public darbars to be held in the Union Territory. The public darbar received an overwhelming response from the public, with people apprising the Secretary about their developmental issues and demands, seeking his intervention and redressal. एडमिनिस्ट्रेशन का ये फैसला मुझे बहुत अच्छा लगा कि पब्लिक की जो भी बातें हैं वो आम जनता की जो बातें हैं वो खुल के बोल सकते हैं। देखिए इतने सारे मसले थे बहुत टाइम से, तो मुझे लगता है कि ये मसले अब लोग खुद बोल सकते हैं। इतना हमें एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें इसलिए इस लायक समझा है कि हम खुद अपनी बात आगे रख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन का ये प्लान बहुत अच्छा है। अगर ये पब्लिक दरबार जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में आ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट हो जाए, ये बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि लोग इससे अपनी जो इनकी ज़रूरत ज़िंदगी के मसले हैं वो हल हो जाएंगे। जो भी ग्रीवेंसेस लोगों की होती हैं वो सुनते हैं और उस पर अमल कराते हैं, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट से कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव होता है। चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी मसला हो तो वो करते हैं। तो जैसे कि हमारा किसी जगह पे हम पेइंग गेस्ट हाउसेस की बात करी तो उस पर बात हुई, तो टूरिज्म डिपार्टमेंट वालों ने उस पर क्लेरिफिकेशन दिया कि कैसे हो जाएगा। डेवलपमेंट ओरिएंटेड हमारे प्रोजेक्ट्स अगर हों उसके बारे में हमने बात करी तो उसके बारे में बड़ा ही अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस मिला। बड़ा ज़रूरी है कि लोग आएँ एडमिनिस्ट्रेशन के पास, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात करें। तो अभी का ऐसा सिस्टम है कि जो ऑफिशियल्स हैं सुनते हैं एंड दे आर वेरी डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड हैं, तो उस पर अमल होती है। The public darbar in the Union Territory has become an efficient tool for the common residents to flag their issues and get those resolved in a minimum possible time. The initiative has garnered much appreciation, and the administration is also taking keen interest in addressing the problems of the public.
Ujjain city of Madhya Pradesh has remained a famous religious tourism destination for generations. To promote these beautiful tourist attractions across the globe, the tourism department came up with a unique idea of celebrating a skydiving festival in Ujjain's Dharmnagri. The 10-day festival saw participation of more than 60 adventure enthusiasts who had an amazing bird-eye view of the Lord Shiva's city. Take a look. The city of Ujjain in Madhya Pradesh is steeped in history and ancient culture, comprehending hundreds of temples as part of the city's preserved heritage. The cultural fabric of Ujjain dates back more than 5,000 years, wherein traditional dance, music and the regional fair hold special significance. During the course of time, Ujjain has evolved, and today the religious city is grooming itself to become more than just a destination for pilgrimage. In a bid to make this religious destination an attraction for everyone, the Madhya Pradesh Tourism Department recently held a 10-day festival for adventure enthusiasts featuring skydiving and paragliding under supervision of experts. ऑल ओवर इंडिया से स्काई डाइविंग को जो पसंद करते हैं, जो ये एक्सट्रीम एडवेंचर एक्टिविटी है, तो जो लोग भी आएंगे यहाँ उज्जैन में, रुकेंगे, उज्जैन को देखेंगे, समझेंगे। हमारा उद्देश्य यही है कि ये परमानेंटली यहाँ इस तरह की एक्टिविटी होती रहे। तो महाकाल की वजह से तो उज्जैन आना होता ही है लोगों का, और साथ में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी जुड़ें ताकि लोग बाग हाई एंड एक्सट्रीम एडवेंचर को भी करने के लिए यहाँ आएँ। Skydiving and paragliding is an aerial sport which allows one to jump off heights with a free parachute. The jump height for skydiving was around 10,000 feet, considering factors like aircraft capabilities, providing a good balance of free fall time and safe descent, while complying with the government regulations. The Adventure Festival drew in over 60 adventure enthusiasts from across India. यहाँ हम लोग 10,000 फुट से टैंडम स्काई डाइविंग कराते हैं। इसमें तो इक्विपमेंट हम यूज़ कर रहे हैं पूरा इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड में मेंटेन किया जाता है। तो कोई भी चीज़ हम अपने तरफ से नहीं करते, कानून के हिसाब से ही पूरा ये स्काई डाइविंग किया जाता है। A special team of skilled professionals was deployed at the event, which prepared participants for aerial sports by helping them put on special suits, while also meticulously checking all equipment, harness, parachute, helmet, goggles, to ensure everything is properly worn and secured. Furthermore, the participants were briefed by the mentors about the safety procedures, equipment functions and the jump sequence in detail. उज्जैन जितना जमीनी तौर पे सुंदर है, उससे कई ज्यादा खूबसूरत वो आसमान से लगता है। शिप्रा नदी हो या महाकाल लोक हो, हर चीज छोटी जरूर दिखती है लेकिन दिखती बहुत खूबसूरत है। हर हर महादेव। बहुत अमेजिंग था, बहुत मजेदार भी था, बहुत अच्छा लगा आके फिर से उज्जैन में, और स्काई डाइविंग जैसी चीज उज्जैन में हो सकती है, ये मेरे लिए थोड़ा कंसेप्चुअल के बाहर था, तो इट वाज अमेजिंग। The event was an initiative by the state government to promote its regional beauty and cultural heritage, and will continue in the preceding years. It serves as a gateway for the world to experience the state's vibrant culture and rich traditions. That's all we have for you in this week's episode. Goodbye and take care. मोदी सरकार